Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our English Reader book by Vani Publishers, and the name of the book is English Reader Hindi Anuvad Sahit Class 3. Now we will move to next chapter, chapter number 14, and name of the chapter is Little Red Riding Hood 2. After some time, Little Red Riding Hood came to the cottage. She stood outside and knocked the door. "Who is there?" asked the big bad wolf in a voice like an old woman. "I am your Little Riding Hood, Granny," said the girl. "May I come in?" "Oh, it's my Little Riding Hood," said the wolf. "Come in, my dear. Open the door and come in. I am taking my rest." Little Red Riding Hood opened the door and went in. She went up to the bed and said, "I have brought you some nice things to eat. Granny, see, here they are." The wolf opened his face a little to look at them. "What big eyes you have, Granny," said Little Riding Hood. "All the better to see you with, my dear," said the wolf. The girl said, "And what big ears you have." "All the better to hear you with, my dear," said the wolf. The girl said, "And what big teeth you have, Granny." "All the better to eat with you," said the big bad wolf, and jumped out of the bed. Little Red Riding Hood ran away from him. She ran to door and shouted, "Help, help." A woodcutter who was passing by heard her shouts. He ran into the cottage to help her. She killed the big bad wolf with his axe and saved Little Riding Hood. तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। कुछ समय बाद नन्ही रेड राइडिंग हुड झोपड़ी में आई। वह बाहर खड़ी होकर दरवाजे को खटखटाती है। "कौन है वहाँ?" विशालकाय बूढ़े भेड़िए ने महिला की आवाज में पूछा। "दादी माँ, मैं आपकी नन्ही रेड राइडिंग हुड हूँ," लड़की बोली। "क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?" "अच्छा, यह मेरी नन्ही रेड राइडिंग हुड है," भेड़िए ने कहा। "मेरी प्रिय, अंदर आ जाओ। दरवाजे को खोलकर अंदर आओ। मैं आराम कर रही हूँ।" नन्ही रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वह बिस्तर तक आ गई और बोली, "दादी माँ, मैं आपके लिए खाने की वस्तुएं लेकर आई हूँ। देखिए, ये रही यहाँ।" भेड़िए ने वह देखने के लिए अपना थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला। "दादी माँ, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं," नन्ही रेड राइडिंग हुड बोली। "मेरी प्यारी बच्ची, सभी को सही देखने के लिए," भेड़िए ने कहा। लड़की बोली, "और कितने बड़े कान हैं आपके, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे साथ ज्यादा सुनने के लिए," भेड़िया बोला। लड़की बोली, "दादी माँ, कितने बड़े दांत हैं आपके, इन सभी के साथ तुम्हें खाने के लिए।" यह कहकर विशालकाय बूढ़ा भेड़िया बिस्तर से कूद गया। नन्ही रेड राइडिंग हुड वहां से भागी। वह दरवाजे तक दौड़ी और चिल्लाई, "सहायता, सहायता!" एक लकड़हारा जो वहां से गुजर रहा था, उसने उसका शोर सुना। वह झोपड़ी में उसकी सहायता करने को दौड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस विशालकाय बूढ़े भेड़िए को मारकर नन्ही राइडिंग हुड को बचा लिया। किसने बचाया? लकड़हारे ने। Now time to do some exercise. Exercise 1. Answer the following questions. My dear kids, exercise 1 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise 2. Complete the sentences. कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, चलिए उनकी सहायता से हम सेंटेंसेस को पूरा करते हैं। रेड राइडिंग हुड नॉक डैश द डोर, तो यहाँ आएगा एट द डोर। The wolf said, "Open the door and come in." Wolf jumped dash off the bed.
out of the bed. Red Riding Hood ran, dashed the door shouting for help. Ran to the door and shouting for the help. The woodcutter killed the wolf with his axe. Now next exercise, exercise 3, match the opposite. विलोम को मिलाइए. Big, big का opposite होता है small. Bad, good. Open, shut. Outside, inside, better, worse. Now exercise 4, complete the words in the following sentences. Little Red Riding Hood was a small, कौन थी वो small? Girl. She was going to her granny. वो अपनी granny के पास जा रही थी. Her granny lived on the other side of the forest. Forest. On the way, Little Riding Hood met a wolf. 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 The wolf wanted to dash her. तो यहाँ आएगा eat. My dear kids, rest of the exercises you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.